Hello and welcome everyone. Is my voice clear and audible? Yes, you are audible. Okay, thank you so much, sister. So we'll begin with a short meditation. Sit back and relax. Withdraw your attention from the outside world and bring it to yourself. As you inhale, feel the freshness of the air. As you exhale, imagine any feeling of not being enough leaving your body. Allow yourself to let go. Notice the sensation of love rising within you. It's not just a feeling, but a state of being. Imagine yourself as a radiant, loving light. As you inhale, this light grows, filling your entire being. As you exhale, imagine this loving energy extending outward, embracing all beings, all situations, just as they are. Repeat the phrase, I am love, to yourself. Feel the truth of these words resonating deep within your being. In this state of being love, you are not seeking love outside of yourself. You are not trying to get something from someone else. You are simply being the love that you are. Rest in this loving awareness, allowing it to guide you in all aspects of your life. Remember, love is not something you do, it's who you are. It's your true nature, your essence. Thank you so much. So we begin with today's session. I'll just share the screen with you. Okay. So today we're going to start reading from Assessing the Power of the Now, which is from chapter 3 and PDF page number 53. Okay. So a moment ago, when you talked about the eternal present and the unreality of past and future, I found myself looking at that tree outside the window. I had looked at it a few times before, but this time it was different. The external perception had not changed much, except that the colors seemed brighter and more vibrant. But there was now an added dimension to it.
This is hard to explain. I don't know how, but I was aware of something invisible that I felt was the essence of that tree, its inner spirit, if you like. And somehow I was part of that. I realize now that I hadn't truly seen the tree before, just a flat and dead image of it. Now, when I look at the tree, some of that awareness is still present, but I can feel it slipping away. You see, the experience is already receding into the past. Can you, can something like this ever be more than a fleeting glimpse? तो जो सीकर है वो कह रहे हैं कि ऑथर से बात करते करते उनकी नजर बाहर एक ट्री पे गई तो कहते अब उनको पहले कहते मैं देखता था तो बस एक जस्ट एज अ ट्री देखता था बट अब उनको ऐसे लग रहा था जैसे कुछ लाइफ है कुछ दिस समथिंग मोर वाइब्रेंट मतलब उनको जैसे लगा वो एसेंस देख पा रहे थे ट्री के ही वाज फीलिंग सो फुल ऑफ लाइफ बट वही कह रहे थे कि वो यू नो थोड़ा टाइम फिर वो दोबारा वो स्लिप अवे होने लगा वो जो फीलिंग ऑफ द ट्रू एसेंस ऑफ द ट्री फुल ऑफ लाइफ वाइब्रेंसी वो बस कुछ समय के लिए उन्होंने फील किया फिर दोबारा ही गॉट बैक टू द द पास्ट एंड whatever जो उनके माइंड में चल रहा था वो दोबारा चलने लगा तो कहते हैं कि ये जो जो फीलिंग है जो उन्होंने फील किया फॉर a few seconds जिसमें he was fully in the present and he was looking at the tree and उसका tree का भी उनको जैसे कहो इनर स्पिरिट जैसे नजर आ रहा था fully alive तो कह रहा था कि ऐसे कुछ हो सकता है कि ये खाली एक ग्लिम्स ना हो हम सारा टाइम उसी अवेयरनेस में रहे उसी प्रेजेंस में रहे जो भी चीजें हम आसपास देखें वी फाइंड देम full of life, full of that God essence. तो ऑथर समझा रहे you were free of time for a moment. You moved into the now and therefore perceived the tree without the screen of mind. तो ऑथर कह रहे हैं कि आप एकदम प्रेजेंट में चले गए और आपने जब ट्री को देखा आपने अपने माइंड से नहीं देखा नॉट फ्रॉम द स्क्रीन ऑफ योर माइंड द अवेयरनेस ऑफ बीइंग became part of your perception. With the timeless dimension comes a different kind of knowing, one that does not kill the spirit that lives within every creature and everything, a knowing that does not destroy the sacredness and mystery of life, but contains a deep love and reverence for all that is, a knowing of which the mind knows nothing. तो कहते जब आपने अपने स्क्रीन ऑफ माइंड से नहीं देखा व्हेन यू वर इन योर सोल कॉन्शियस यू वर जब आप माइंड से आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे तो उसमें जो हमें हर चीज में वो प्योरिटी वो सेक्रेडनेस दिखती है वो वो हम कभी भी अपने माइंड से नहीं देख सकते एज लॉन्ग एज वी आर आइडेंटिफाइड विद आवर माइंड एंड वी आर नॉट इन द प्रेजेंट हम वो सेक्रेडनेस कभी देख नहीं पाएंगे हमारी आसपास जो चीजें हैं नेचर है उससे हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. The mind cannot know the tree. It can only know facts or information about the tree. My mind cannot know you, only labels, judgments, facts, and opinions about you. Being alone knows directly. तो माइंड क्या समझता है माइंड खाली नॉलेज ले सकता है कि मैं क्या हूँ व्हाट्स माय नेम व्हाट आर द फैक्ट्स अबाउट मी मैं कहाँ रहती हूँ ऑल दोज थिंग्स माइंड कैन ओनली रजिस्टर इंफॉर्मेशन बट जो सोल है सोल कैन कनेक्ट विद द सोल सोल नोज the other soul मतलब उसके लिए soul doesn't need any external things to identify with another soul or to nature or anything that exists on this planet. There is a place for mind and mind knowledge,
It is in the practical realm of day-to-day living. However, when it takes over all aspects of your life, including your relationships with other human beings and with nature, it becomes a monstrous parasite that, unchecked, may well end up killing all life on the planet and finally itself by killing its host. तो ऑथर समझा रहे हैं कि माइंड और माइंड नॉलेज की जरूरत है, डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में है, बट जब वो हमारे हर हर एस्पेक्ट में जब हम माइंड से आइडेंटिफाई करने लगते हैं, हर थॉट से, हर इमोशन से, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव जो भी माइंड में आ रहा है, अगर हम उससे आइडेंटिफाई करने लगते हैं, रिलेट करने लगते हैं, उसी को सच मानने लगते हैं, तो इट कैन बी वेरी हार्मफुल। वो बहुत बहुत हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। You have had a glimpse of how the timeless can transform your perceptions. But an experience is not enough, no matter how beautiful or profound. What is needed and what we are concerned with is a permanent shift in consciousness. Underline, a permanent shift in consciousness. तो जो सीकर कह रहा था, जैसे उसने एक मोमेंट ऑब्जर्व किया जब बिल्कुल वो ही वाज टाइमलेस, थॉटलेस, एकदम वो सोल कॉन्शियस वाली जो फीलिंग थी, सिर्फ फॉर अ फ्यू मोमेंट्स उसने वो अपने आप को एक्सपीरियंस किया, ही एक्सपीरियंस दैट जब वो ट्री देख रहा था। बट ऑथर समझा रहे हैं कि वो हमें सिर्फ कुछ मोमेंट्स के लिए नहीं फील करना, वो हमने अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करना है, हमने अपनी कॉन्शियसनेस को परमानेंटली उस स्टेट में रखना है। So break the old pattern of present moment denial and present moment resistance. Make it your practice to withdraw attention from past and future whenever they are not needed. तो ये हमें अपनी जो इतनी पैटर्न बन चुका है माइंड से आइडेंटिफाई होने का, हमें अब प्रैक्टिस करनी है उसको ब्रेक करने की। जब भी नीड ना हो, या जब भी हमें कुछ टाइम मिले, हम थोड़ा टाइम साइलेंस में बैठे, जितना हो सके प्रेजेंट अवेयरनेस में रहने की कोशिश करें। Stop out of the time dimension as much as possible in everyday life. If you find it hard to enter the now directly, start by observing the habitual tendency of your mind to want to escape from the now. तो ऑथर कह रहे हैं कि अगर एकदम से हमें प्रेजेंट में रहना मुश्किल होगा, क्योंकि माइंड को आदत नहीं है, तो हमें क्या करना है, स्टार्ट कैसे करना है कि हम ऑब्जर्व करना शुरू करें कि कितनी बार हमारा माइंड वॉन्डर करता है पास्ट में, फ्यूचर में। वी नीड टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग. You will observe that the future is usually imagined as either better or worse than the present. If the imagined future is better, it gives you hope or pleasurable anticipation. If it is worse, it creates anxiety. Both are illusory. तो हम जब कभी अपने माइंड के थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे, तो यूजुअली जब फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं, या फ्यूचर के बारे में या पास्ट, और फ्यूचर थॉट्स क्या होते हैं, जब वो कुछ होता है, जब हम सोचते हैं कि कुछ वर्स होने वाला है, या तो वो थॉट्स चलते हैं, या तो हम सोचते हैं कि नहीं, वी होप फॉर समथिंग बेटर। बट वो दोनों ही चीजें क्या है, इट्स जस्ट माइंड क्रिएटेड, दोनों ही इल्यूजन्स हैं। Through self observation, more presence comes into your life automatically. The moment you realize you are not present, you are present. मतलब जब हम ये रियलाइज करेंगे ना कि हम प्रेजेंट नहीं है, वी आर एक्चुअली प्रेजेंट देन, जब हम ऑब्जर्व करने लगेंगे अपने थॉट्स को कि माइंड क्यों माइंड वॉन्डर कर रहा है, तब हम प्रेजेंट में आएंगे. Whenever you are able to observe your mind, you are no longer trapped in it. Another factor has come in.
something that is not of the mind, the witnessing presence. Be present as the watcher of your mind, of your thoughts and emotions, as well as your reactions in various situations. Be at least as interested in your reactions as in the situation or person that causes you to react. Notice also how often your attention is in the past or future. तो ऑथर कह रहे हैं आप कॉन्स्टेंटली अपने माइंड का वॉचर बनो सिचुएशंस का भी थॉट्स और इमोशंस का भी और हम कैसे रिएक्ट करते हैं जब सिचुएशंस हमारे पास आती है बट उस रिएक्शंस में भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेना कि ऐसा क्यों रिएक्ट किया मैंने ऐसे क्यों किया बस ऑब्जर्व करना है एक वो जो पैटर्न है हमारा वी नीड टू स्टार्ट ऑब्जर्विंग दैट don't judge or analyze what you observe. Watch the thought, feel the emotion, observe the reaction. ये भी बहुत important line है. Watch the thought, feel the emotion, and observe the reaction. Don't make a personal problem out of them. You will then feel something more powerful than any of those things that you observe. The still, observing presence itself behind the content of your mind, the silent watcher. तो जब हम ऑब्जर्व करने लगेंगे और इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना कि ये थॉट क्यों आ रहा है ये इमोशन क्यों आ रहा है और कई बार सिचुएशंस में भी जब हम रिएक्ट करते हैं तो उसमें भी खुद को जज नहीं करना ऑब्जर्व करना अपने आप को कि ये क्या पैटर्न है और फिर स्लोली स्लोली हम रियलाइज करेंगे कि हम क्या है वी आर एक्चुअली द वॉचर और और ये जो भी हो रहा है ये सब माइंड कर रहा है we are not this body not this mind we are just the silent watcher behind it we are a soul and we are watching all the actions that we are doing. Intense presence is needed when certain situations trigger a reaction with a strong emotional charge, such as when your self-image is threatened, a challenge comes into your life that triggers fear, things go wrong, or an emotional complex from the past is brought up. तो जब हम डेली रूटीन में प्रैक्टिस करेंगे टू स्टे इन द नाउ टू बी प्रेजेंट टू बी एन ऑब्जर्वर हमारे थॉट्स को हमारे रिएक्शंस को सब जब हम ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो फिर हम प्रिपेयर होंगे फॉर सिचुएशंस जो स्पेशली सिचुएशंस आती हैं जो हमें ट्रिगर करते हैं कुछ रिएक्शन के लिए तो बिकॉज वो ऑल ऑफ अ सडन आती है बट जितना हम प्रेजेंट रहेंगे वील बी एबल टू डील विद दीज सिचुएशंस in those instances the tendency for you to become unconscious there's a tendency जब ऐसे कोई चैलेंज आ जाता है ऑल ऑफ अ सडन अनएक्सपेक्टेड तो एकदम से रिएक्शन निकलता है तो वो टेंडेंसी होती है अनकॉन्शियस होने की the reaction or emotion takes you over. You become it. You act it out. You justify, make wrong, attack, defend, except that it isn't you. It's the reactive pattern, the mind in its habitual survival mode. तो जब रिएक्शन या इमोशन टेक ओवर कर जाती है ऐसी सिचुएशंस में तभी भी जब हम ऑब्जर्व करेंगे ना हम रियलाइज करेंगे कि ये ये एक हैबिचुअल रिएक्शन है क्योंकि माइंड को इतनी आदत होगी है रिएक्ट करने की तो उसमें भी खुद को जज नहीं करना है अपने आप को ऑब्जर्व करना है आइडेंटिफिकेशन विद द माइंड गिव्स इट मोर एनर्जी observation of the mind withdraws energy from it अंडरलाइन जब हम आइडेंटिफाई करेंगे माइंड के साथ उसको और एनर्जी मिलेगी पर जब हम ऑब्जर्व करेंगे कि ठीक है ये सिचुएशन आई हमने रिएक्ट किया ऑब्जर्व करेंगे कि ये हमारा पैटर्न है हम रिएक्ट करते हैं तो वील विड्रॉ एनर्जी वील स्टार्ट ऑब्जर्विंग आवरसेल्फ बट अगर हम आइडेंटिफाई करने लगे तो हम बोलेंगे नहीं ये तो हमारी हैबिट है ये तो हम हर बार करते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू Identification with the mind creates more time
Observation of the mind opens up the dimension of the timeless. The energy is withdrawn from the mind. The energy that is withdrawn from the mind turns into presence. Once you can feel what it means to be present, it becomes much easier to simply choose to step out of the time dimension whenever time is not needed for practical purposes and move more deeply into the now. तो जब हम ये प्रैक्टिस करते रहते हैं ना कि टू बी इन द प्रेजेंट, तो जब भी फिर हमें जब आदत पड़ जाती है, तो जब हमारा जो डे टू डे रूटीन होता है, जैसे जो प्रैक्टिकल वे में हमें टाइम यूज करना है फॉर फॉर थिंग्स दैट वी हैव टू डू, उसके बाद वी कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग कमिंग इन टू द प्रेजेंट, और फिर वो एक हैबिट बन जाएगी। तो अपना जो भी हम करके वी कैन चूज टू कम बैक टू द प्रेजेंट। This does not impair your ability to use time, past or future, when you need to refer to it for practical matters. तो इससे ये नहीं होगा कि हम टाइम में वापस जा नहीं पाएंगे अगर हमें पास्ट का या फ्यूचर का कुछ प्रैक्टिकल वे में नीड चाहिए, वी नीड इट फॉर आवर डे टू डे रूटीन, तो वी कैन गो बैक टू द पास्ट एंड फ्यूचर। Nor does it impair your ability to use your mind. In fact, it enhances it. तो इससे हमारी माइंड की एबिलिटी और enhance होएगी। हम वो जितना हम प्रेजेंट में आएंगे, हमारा माइंड भी और खुलेगा। अ, जैसे कहते हैं ना, न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। So this will actually help us when we start becoming more present, more soul conscious. When you do use your mind, it will be sharper, more focused. Letting go of psychological time. Learn to use time in the practical aspects of your life. We may call this clock time, but immediately return to the present moment awareness when those practical matters have been dealt with. So, practical चीजों के लिए टाइम को यूज करना है, तो उसको ऑथर ने क्या कहा है, एक टर्म दिया है क्लॉक टाइम। तो आप उसके लिए जो भी आपका डे टू डे रूटीन है उसके लिए यूज करिए, और देन कम बैक टू द प्रेजेंट मोमेंट एज सून एज आपका वो वो हो गया है जो भी आपने डे टू डे में करना है। In this way, there will be no buildup of psychological time, which is identification with the past and continuous compulsive projection into the future. तो साइकोलॉजिकल टाइम क्या है? जब हम पास्ट और फ्यूचर में माइंड जब वॉन्डर करता रहता है, दैट इज साइकोलॉजिकल टाइम। तो यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ टाइम ऑथर ने समझाया है। Clock time is not just making an appointment or planning a trip. It includes learning from the past so that we don't repeat the same mistakes over and over, setting goals and working toward them, predicting the future by means of patterns and laws, physical, mathematical, and so on. Learn from the past and taking appropriate action on the basis of your predictions. तो ऑथर समझा रहे हैं जो क्लॉक टाइम है उसमें क्या है, हमने अपने पास्ट से लर्न करना है ताकि हमने उस पे वर्क करना है। व्हेन एट दिस एट दैट पॉइंट जो भी हमने पास्ट में मिस्टेक्स किए, वी कैन सी हाउ वी डोंट रिपीट देम अगेन। तो सेटिंग गोल्स में हम जर्नलिंग कर सकते हैं, कि हमें आगे से अपने अपने लिए क्या गोल सेट करने हैं। So, so that is how we can use the clock time. But even here, within the sphere of practical living, where we cannot do without reference to past and future, the present moment remains the essential factor. Any lesson from the past becomes relevant and is applied now. Any planning as well as working toward achieving a particular goal is done now. तो यहाँ पे भी ऑथर कह रहे हैं कि जब हम क्लॉक टाइम में भी है तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। तो जो भी हमने पास्ट में मिस्टेक्स की है
उसे अभी हमें इस टाइम उसी टाइम पे अप्लाई करना है, कुछ भी हो जाए वी हैव टू रिमेम्बर एंड वी हैव टू अप्लाई इट देन। जो भी प्लानिंग या गोल सेट कर रहे हैं दैट आल्सो हैज टू बी डन नाउ इन द प्रेजेंट। The enlightened person's main focus of attention is always the now, but they are still peripherally aware of time. In other words, they continue to use clock time but are free of psychological time. मतलब जो भी enlightened है वो उनका focus हमेशा is in the now, in the present. They're completely present. बट वो टाइम का दे आर अवेयर ऑफ द टाइम। और वो क्या करते हैं, दे यूज क्लॉक टाइम, नॉट साइकोलॉजिकल टाइम। तो साइकोलॉजिकल टाइम वही है जब हम पास्ट और फ्यूचर में वॉन्डर करते रहते हैं। Be alert as you practice this so that you do not unwittingly transform clock time into psychological time. For example, if you made a mistake in the past and learn from it now, you are using clock time. On the other hand, if you dwell on it mentally and self criticism, remorse, or guilt builds up, then you're making the mistake into me and mine. Sorry. You make it part of your sense of self, and it has become psychological time, which is always linked to a false sense of identity. Non forgiveness necessarily implies a heavy burden of psychological time. तो वही ऑथर समझा रहे हैं कि जब हम ये कर रहे हैं हमें बहुत अवेयर रहना है कि जब हम क्लॉक टाइम यूज कर रहे हैं हमें उसको साइकोलॉजिकल टाइम नहीं बनाना है कि जैसे हमने कोई मिस्टेक किया है पास्ट में और हमें उससे सीखना है, क्लॉक टाइम यूज करके अपने आप को एफर्मेशंस देके या जर्नलिंग करके, दैट इज कॉल्ड यूजिंग क्लॉक टाइम। बट अगर हम क्लॉक टाइम में बैठ के अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जब ये सब नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, हम फिर सेल्फ क्रिटिसिज्म में जा रहे हैं और फिर साइकोलॉजिकल टाइम में जा रहे हैं। फिर जो मिस्टेक है वो मेरी मिस्टेक बनती जा रही है। We are again taking it into a sense of self, false identity create कर रहे हैं। और ऑथर कह रहा है कि नॉन forgiveness necessarily implies a heavy burden of psychological time जब हम खुद को forgive नहीं करते। If you set yourself a goal and work toward it, you are using clock time. You are aware of where you want to go, but you honor and give your fullest attention to the step that you are taking at this moment. If you then become excessively focused on the goal, perhaps because you're seeking happiness, fulfillment, or a complete sense of self in it, the now is no longer honored. It becomes reduced to a mere stepping stone to the future with no intrinsic value. Clock time then turns into psychological time. तो यहाँ पे ऑथर क्या कह रहे हैं कि अगर हमने अपने आप के लिए गोल सेट किया एंड हम उसके लिए उसकी तरफ काम करें तो वो क्या है, दैट इज यूजिंग क्लॉक टाइम बिकॉज वी आर अवेयर कि हमने एक मिस्टेक जो भी कुछ पास्ट में हुआ उससे हमने सीखा और हम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं अपने आप पे। बट अगर हम बहुत ज्यादा उसमें फोकस करने लगे, बहुत ज्यादा अपने आप को फिर से जज करने लगे, अ, खुशी ढूंढने लगे, बहुत ज्यादा उससे ज्यादा वो आइडेंटिफाई करने लगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर से हम वही साइकोलॉजिकल टाइम में जा रहे हैं। Clock time then turns into psychological time. Your life's journey is no longer an adventure, just an obsessive need to arrive, to attain, to make it. तो अगर हम बहुत ज्यादा अपने आप पे अपने आप को उसी एक ही चीज पे फोकस करने लगे, जज करने लगे, you no longer see or smell the flowers by the wayside either, nor are you aware of the beauty and the miracle of life that unfolds all around you when you are present in the now.
तो author seeker कह रहा है, I can see the supreme importance of the now, but I cannot quite go along with you when you say that time is a complete illusion. The author समझा रहे, when I say time is an illusion, my intention is not to make a philosophical statement. I am just reminding you of a fact so obvious that you may find it hard to grasp and may even find it meaningless. But once fully realized, it can cut like a sword through all the mind created layers of complexity and problems. तो ऑथर कह रहा है कि मेरे को यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मैं जस्ट आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि ये कितना ऑब्वियस है कि जो है अब है, एवरीथिंग इज जस्ट इन द प्रेजेंट, इट इज नॉट इन द पास्ट और द फ्यूचर. और जब हम ये डीप रियलाइज करेंगे तो दैट विल बी लाइक कटिंग ऑल द लेयर्स ऑफ द माइंड. सॉरी. Let me say it again. The present moment is all you ever have. There is never a time when your life is not this moment. Is this not a fact? मतलब ये कितना देखा जाए तो ऑब्वियस है कि जो है अब है, इट्स अ फैक्ट, ना पास्ट में है ना फ्यूचर में है. The insanity of psychological time. You will not have any doubt that psychological time is a mental disease if you look at its collective manifestations. They occur, for example, in the form of ideologies such as communism, national socialism, or any nationalism or rigid religious belief system which operate under the implicit assumption that the highest good lies in the future and that therefore the end justifies the means. The end is an idea, a point in the mind projected future, when salvation in whatever form, happiness, fulfillment, equality, liberation, and so on, will be attained. तो जो हमारी जो ये मैनिफेस्टेशंस होती है कि जो है फ्यूचर में है, तो ऑथर वही कह रहे हैं कि हम फिर तब रियलाइज करते हैं कि ये सारा एक मेंटली ही बिल्डअप हुआ है. Not infrequently, the means of getting there are the enslavement, torture, and murder of people in the present. For example, it is estimated that as many as 50 million people were murdered to further the cause of communism, to bring about a better world in Russia, China, and other countries. This is a chilling example of how belief in a future heaven creates a present hell. मतलब ये जो negative belief system है, that can be so dangerous and harmful. Can there be any doubt that psychological time is a serious and dangerous mental illness? How does this mind pattern operate in your life? Are you always trying to get somewhere other than where you are? Is most of your doing just a means to an end? Is fulfillment always just around the corner or confined to short-lived pleasures such as sex, food, drinks, drugs, or thrills and excitement? तो ये ऑथर हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि आपका माइंड कैसे ऑपरेट करता है, क्या आप हर चीज में आप सोचते हैं कि मैं ये करूंगी इससे मुझे क्या फायदा होगा, या जो शॉर्ट लिव प्लेजर्स होते हैं जैसे ईटिंग आउट, गोइंग फॉर मूवीज, यू नो गोइंग ऑन हॉलीडेज, क्या ये सब आपको फुलफिल करता है? तो माइंड, तो ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ऑथर हमसे. Are you always focused on becoming, achieving, and attaining, or alternatively chasing some new thrill or pleasure? So we need to ask ourselves this. Do you believe that if you acquire more things, you will become more fulfilled, good enough, or psychologically complete? Are you waiting for a man or woman to give meaning to your life? In the normal
mind identified or unenlightened state of consciousness, the power and infinite creative potential that lie concealed in the now are completely obscured by psychological time. तो मतलब ये सब क्वेश्चंस अगर हम पढ़ें तो अगर हम बहुत ज्यादा माइंड आइडेंटिफाइड हैं तो हम सब इन सब के पीछे ही भाग रहे होते हैं ऑल आवर लाइफ बिकॉज हम सब वही साइकोलॉजिकल टाइम जैसे ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं हम सब वो साइकोलॉजिकल टाइम में ही इन्वॉल्व हो चुके हैं. Your life then loses its vibrancy, its freshness, its sense of wonder. The old patterns of thought, emotion, behavior, reaction, and desire are acted out in endless repeat performances, a script in your mind that gives you an identity of sorts but distorts or covers up the reality of the now. The mind then creates an obsession with the future as an escape from the unsatisfactory present. तो मतलब यही जो ओल्ड पैटर्न्स हमारे अंदर चलते हैं कि जब हमें ये जॉब मिल जाएगा या when we'll get this life partner or whoever to make us feel complete, तो हम इसी थॉट प्रोसेस में चलते रहते हैं और फिर जो लाइफ का एसेंस है, जो रियलिटी है, जो हमारा ट्रू नेचर है, ओरिजिनल सेल्फ है, हम उसको एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते. तो ऑथर क्या समझा रहे हैं कि माइंड जो है वो ऑब्सेशन क्रिएट करता है फ्यूचर के साथ और ऑलवेज एस्केप्स फ्रॉम द प्रेजेंट. ओके, तो वील एंड द सेशन हियर टुडे. यहाँ तक करेंगे. अच्छा, तो आई जस्ट शेयर द क्वेश्चंस विथ यू. तो आज के क्वेश्चंस है, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड अबाउट द इम्पोर्टेंस of time in our lives? Do you agree with the author describing time as an illusion? तो आज हमने टाइम के बारे में क्या समझा, क्यों इम्पोर्टेंट है, और क्या आप अग्री करते हो कि ऑथर describes time as illusion? So the second question is, why, according to the author, do some people love to engage in dangerous activities? What do you feel about this? तो ये भी आज हमने पढ़ा. आज के सेशन में हमने ये कवर किया कि क्यों लोगों को डेंजरस एक्टिविटीज करना पसंद है. And the third question is, the author has discussed gaining a permanent shift in consciousness. What have you understood by what the author has suggested? तो a permanent shift in consciousness, इसका क्या मतलब है? How can you implement this in your life? और हम अपनी लाइफ में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो ये आज के तीन क्वेश्चंस हैं. तो आप इसको कमेंट सेक्शन में भी आंसर कर सकते हैं or you can join our WhatsApp group and you can answer over there as well. So thank you so much for joining today's session. We'll see you all tomorrow. Thank you.